वेलकम टू B2 नेट कोड चैनल। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेट, दैट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो गाइस, हमें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? चलिए वो देख लेते हैं। देयर वाज सम प्रॉब्लम विद IPv4. Those problems were there was shortage of IPv4 addresses. Allocation of the last IPv4 addresses is forecasted for the year 2005. Address classes were replaced by usage of CIDR, but this is not sufficient. So that's why उसका short term solution जो हमने निकाला था वो था network address translation. और IPv4 shortage, address shortage का long term solution है IPv6, that is also called IP in next generation. It provides an extended address range. IPv4 has a 32-bit address range. IPv6 has a 128-bit address range. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज नेट? इट ट्रांसलेट्स between local addresses and public addresses. Many private hosts share few global addresses. राइट, इस पिक्चर में देख लेते हैं। ये एक साइड हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, एक साइड मान लें पब्लिक नेटवर्क है। एंड देयर इज अ राउटर दैट इज कनेक्टिंग प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक नेटवर्क। सो प्राइवेट नेटवर्क में हम विल बी यूजिंग प्राइवेट एड्रेस रेंज, that is 10.0 or 172.16 range or 192.168 range, right? So these local address may not be used externally. So these local addresses, these local private network address range will remain inside the LAN only. That will never go on the WAN, on the internet. So on the public network, we will have public addresses only that are globally routable. So public addresses are globally unique, right? For example, if you compare the IP address of facebook.com or microsoft.com or cisco.com, right? They are not assigned to any other company. So they are unique. So every device on the internet has a unique global IP or public IP, whereas inside their network they can assign private address range to their employees, to their local machines, servers, printers, and other devices, right? So this helps us to address the shortage of global IP addresses, IPv4 addresses. So realm with the private addresses. So to now to bring those private addresses to communicate on the internet, we need some technology that can translate those private addresses to public addresses. So that's why NAT was designed for that. So we create a NAT router that maps local private addresses to the global IP addresses and maps that information in the NAT table inside the NAT router device, right? So the you can see that uh, this NAT router translates, and we may have a reserve pool to translate those private IP addresses to the public IP addresses, and that map is maintained inside the database. Okay, let's go to next slide. A timeout value default 15 minutes instructs NAT how long to keep an association in an idle state before returning the external IP address to free NAT pool. Now let's understand about the terms we use in NAT addressing. First of all, we have inside local. The term inside refers to an address used for a host inside an enterprise. It's an actual IP address assigned to a host in the private IP enterprise network, right? So inside local means the IP private IP address of a device inside the LAN, right? Now let's see what is inside global. NAT uses an inside global address to represent the inside host as the packet is sent through the outside network, typically the internet.
A NAT router changes the source IP address of packets sent by an inside host from an inside local address to an inside global address as the packet goes from the inside to the outside network, right? So if the IP address is translated into a public IP, that public IP becomes the inside global address, and this inside global IP is mapped to the inside local IP inside the LAN, okay, of the device. तो देख लेते हैं outside global. The term outside refers to the address used for a host outside an enterprise, that is the internet, and outside global is the actual IP address assigned to a host that resides in the outside network, typically the internet. So guys, नेट राउटर के बाद नेट राउटर डेटा को भेजेगा, उसके बाद इंटरनेट पे जो आईपी एड्रेस जाएगा, दैट विल बी द आउटसाइड ग्लोबल. And outside local is the NAT uses an outside local address to represent the outside host as the packet is sent through the private enterprise network. A NAT router changes a packet destination IP address sent from an outside global address to an inside host as the packet goes from the outside to the inside network. तो अगर गाइज ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं. Suppose we have a network and here we have network A. Now this network A wants to send the data to uh, this different network through the WAN, right? So here, let's suppose the private IP address of this device is 10.47.10.10. Okay, and it wants to communicate with the machine of a different company, okay, or same company, but across the internet. That LAN, different LAN may be in the same city or same country, or maybe in the different city or different country. So how we'll see net in picture? So the now this device has put the source address as 1047.10.10, and let's suppose here it mentions the destination address as 192.50.20.5. Okay, now this NAT router, this router is a NAT router. We have configured netting on this router. It will send this data outside as a source IP address as 193.50.30.4. Okay, and inside its NAT table, it will create a map that I have mapped this 10 network to this 193 network, and I am sending this 10.47.10.10 ID IP address as 193.50.30.4 IP, right? So then the data is sent here. Now this machine will see this that packet is not coming from 10 network. It will see this network B machine. It will see that data is coming from 193.50.30.4 network, right? So this is how netting goes. So here we can say that NAT with the WAN interface 138. तो यहाँ से सोर्स एड्रेस लग के जा रहा है 10.00.10. डेस्टिनेशन एड्रेस जा रहा है 138.76.29.7. ओके, एंड हियर एट दिस राउटर नेटिंग इज डन, एंड सोर्स एड्रेस यहाँ पे लग रहा है इसका राउटर का पब्लिक आईपी, दैट इज 138.76.28.4. ओके, एंड व्हेन इट इज रीचिंग this network, it sees that the packet is coming from 138.76.28.4. Okay, and when it replies, it will add its own IP address as source, and then destination address will be this router's IP.
But now only this NAT router knows that this 138.76.28.4 IP was assigned for this 10.00.10 network. So that's why it will send the data back to the same machine. This is how network address translation happens. So guys, we have three kinds of NATs. One is static NAT, dynamic NAT and overloading NAT with PAT. चलिए देखते हैं इनकी details. With static NAT, the NAT router simply configures a one-to-one mapping between the previous address and the registered address that is used on its behalf. Uh, Dynamic NAT, like static NAT, the NAT router creates a one-to-one mapping between an inside local and inside global address and changes the IP address in packets as they exit and enter the inside network. However, the mapping of inside local address to an inside global address happens dynamically. गाइस अगर आपने मेरे प्राइवेट पुराने वीडियोस देखे हैं नेटिंग पे तो उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम एक पूल बनाते हैं आईपी एड्रेसेस का तो उस पूल को एक्सेस लिस्ट की हेल्प से परमिशन देते हैं परमिट और डिनाई एंड देन दैट routing is done and netting is done by net router. Dynamic net sets up a pool of possible inside global addresses and define criteria for the set of inside local IP addresses whose traffic should be translated with the net. The dynamic entry in the NAT table stays in there as long as traffic flows occasionally. If a new packet arrives and it needs a NAT entry but all the pooled IP address are in use, the router simply discards the packet. तो ये हमें प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी हमारे लैन में कितनी प्राइवेट नेट मशीन्स हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं दैट नीड्स ट्रांसलेशन तो उसी के अकॉर्डिंग हम वो पूल बनाएंगे और उसको आईपी एड्रेसेस उनमें असाइन करेंगे नेक्स्ट देखते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर पैट तो गाइस पैट का क्राइटेरिया पैट का कंसेप्ट नेट के डायनेमिक नेट के सिमिलर ही है बट हियर ports numbers are used and single global IP address is used for all the inside LAN machines, all the inside private machines, right? जैसे देखते हैं हमारे यहाँ पे 10 नेटवर्क पे 10.00 10 00 11 12 13 14 15 कितनी भी मशीन्स हो सकती हैं 10 नेटवर्क पे राइट तो जब भी कोई मशीन बाहर जाएगी डेटा भेजेगी ओके इट विल सेंड यूज अ रैंडम पोर्ट नंबर जैसे फॉर एग्जांपल ये 10.00 10 मशीन इस मशीन पे टेलनेट करना चाहती है राइट टेलनेट वर्क्स एट पोर्ट नंबर 23 so it will use a random port source port with its private IP and it will use the destination IP address and destination port as 23 because telnet runs on port number 23 तो यहाँ से डेटा जाएगा नेट राउटर पे NAT router will convert that 10.00 IP address and source port into public IP and a random port number. Okay, and it will create a table, NAT table, in which it will do the mapping of this information. That now it remembers that I have sent 10.00 10 and source port 3017 data with the help of this IP address and through this port, right? And the destination IP address and port number will remain same. So now the data has reached at this IP. Now this IP doesn't know the about the internal IP address of network A, that is 10.00. It knows about the source port, destination port that was 1024, and the destination IP address that was the global IP of net router. Now this net router responsibility is to check its net table and then send the data back to the same machine from where data originated, right? So port is more practical as compared to static and dynamic net and we use PAT mostly in our environments. So port का ये benefit है it uses single public IP address because it is using port numbers for all the IP addresses. So
here we can see that private IP address network, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस यहाँ पे हो सकता है, लोकल आईपीज हो सकते हैं, तो इनके लोकल पोर्ट्स हो सकते हैं और उसका मैपिंग हो जाएगी ग्लोबल आईपी के साथ, और कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर दे देगा एंड देन इट विल सेंड ऑन द वैन। तो ये गाइज ये टीसीपी आईपी पोर्ट नंबर की मैपिंग सारी नेट टेबल में रहेगी, local IP and local port, and a registered IP with a registered assigned port। गाइज अभी गाइज ये देख लेते हैं, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी, ये स्लाइड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए अभी नेट की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, स्टैटिक नेट हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नेटिंग पे देखा है तो आप ये थ्योरी सेशन के बाद वो दोबारा देख के आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सिर्फ ये बताना होता है आईपी नेट इनसाइड सोर्स, राइट। उसके बाद सोर्स कहाँ से आएगा, स्टैटिक होगा, और इनसाइड लोकल सोर्स आईपी एड्रेस, जो इनसाइड एड्रेस है लेट्स से 10.0.0.1, ठीक है ना, वो किस एड्रेस में कन्वर्ट होके जाए, तो हम दे देंगे इनसाइड ग्लोबल सोर्स आईपी एड्रेस, राइट। तो उसके बाद हमें ये भी बताना होता है कि राउटर का कौन सा इंटरफेस इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है। फॉर एग्जांपल हमारा सीरियल इंटरफेस है, नॉर्मली वो आउटसाइड होता है, तो हम सीरियल को आईपी नेट आउटसाइड कर देंगे, और फास्ट इथरनेट इनसाइड होता है, फास्ट इथरनेट को आईपी नेट इनसाइड कर देंगे। तो गाइज अगर हमने डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन की कमांड्स देखें तो वो होगी आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। हम सबसे पहले एक लिस्ट बना लेंगे, तो उस लिस्ट का, एक्सेस लिस्ट का इधर नाम दे देंगे स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट नंबर, और उसके बाद पूल जो बनेगा पूल का इधर नेम दे देंगे, पूल के बाद नेट पूल नेम। तो उसके बाद जो हम नेट पूल क्रिएट करेंगे वो होगा आईपी नेट पूल, पूल नेम, एंड देन फर्स्ट इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस एंड लास्ट इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस, देन नेट मास्क रिजर्व्ड कीवर्ड, देन इट्स सबनेट मास्क। तो ये गाइज ये मैंने प्रैक्टिकली करा हुआ है, तो आप मेरा ये नेटिंग पे वीडियो ज़रूर देखें, आपको ये कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जस्ट लाइक स्टैटिक हमें ये बता देंगे कौन सा राउटर का कौन सा इंटरफेस इनसाइड है, कौन सा आउटसाइड है। तो ये पैट के लिए कमांड्स वही यूज होंगी, द बट द ओनली डिफरेंस इज एंड में हम इसके दे देंगे ओवरलोड, राइट। जैसे डायनेमिक की कमांड थी उसमें हम यहाँ तक देते थे नेट पूल नेम तक, लेकिन हम एंड में ओवरलोड कीवर्ड अगर ऐड कर देंगे, ये समझ जाएगा कि वी वांट टू यूज पैट, so it will add port numbers to every inside IP, and it will use one global IP for all the private IPs। गाइस ये नेट और पैट के कुछ और बेनिफिट्स होते हैं, ये भी देख लेते हैं। A NAT device helps in increasing the security as it can prevent an outside attacker even to find the local network. This is because of local addressing scheme is not contiguous with the standard IP address space used worldwide. सो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत हेल्पफुल होता है नेटिंग सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज आउटसाइडर्स नो डोंट नो अबाउट द लैन एड्रेसिंग स्कीम, हम कौन सा आईपी एड्रेस नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, 10 नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, 172 नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, 192 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये बाहर वालों को नहीं पता होगा। सो इसलिए दिस वे नेटिंग
provide the security to our internal networks. PAT helps in optimum utilization of IP addresses space by way of allocating one dedicated IP address for organization and internally uses IP addresses as per the need. PAT is the extension of NAT. Say for example there are two computers trying for access to internet. As per PAT, say computer A tries to connect, this time computer A will be assigned with one port number and IP address. At this time another computer B tries for the connection, will be given the same local IP address but the different port number. This way one can conserve the IP address space by way of identifying the receipt packet with the use of port number and local IP address. गाइस स्टैटिक और डायनेमिक के केस में हम एक प्राइवेट आईपी के लिए एक ग्लोबल आईपी हमें चाहिए होता था, राइट? बट पैट के केस में हम मल्टीपल प्राइवेट आईपीज के लिए सिंगल ग्लोबल आईपी से हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज वी आर कंबाइनिंग द प्राइवेट आईपीज विद द पोर्ट नंबर्स. तो पैट की हेल्प से हम 65,000 से 65535 के अराउंड हम पोर्ट नंबर्स होते हैं, तो इतने हम आईपी एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं. सो गाइस, दिस वाज द डिस्कशन अबाउट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. एंड इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ like the video, subscribe to the channel, and don't forget to hit the subscribe notification bell icon. Thank you for watching this video.